Namaste. Today I, Kashish of Class Plus 2 Commerce, welcome you all in the morning assembly of St. Vivekanand Millennium School. Today is 21st August 2021. Now I would request our Sanskrit teacher, Mr. Sunil Dutt Gautam, for today's Panchang. Namaste, sir. नमस्ते। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078 शक संवत 1943 आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, अर्थात मासिक पूर्णिमा का व्रत आज ही है। आज का नक्षत्र श्रवण, आज का योग सौभाग्य है। प्रविष्टे की यदि बात करें तो आज भाद्रपद माह के चौथे प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह मुहर्रम की आज 13वीं तारीख है। कल अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दो महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं। प्रथम रक्षाबंधन एवं दूसरा संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस को सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पहली बार संस्कृत दिवस मनाने की शुरुआत 1969 से हुई थी। तब से ही भारत सहित सभी देशों में संस्कृत दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी को ज्ञात है कि भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। भारत पर विदेशी शासन होने से पूर्व तक संस्कृत ही भारत के गुरुकुलों में पढ़ाई जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित भाषा थी। संस्कृत भाषा में केवल पूजा पाठ इत्यादि के साहित्य नहीं थे। संस्कृत साहित्य की विविधता आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इसमें धर्म और दर्शन, नाटक, काव्य आदि तो हैं ही, इसमें गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, रस विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिल्प आदि में रचित ग्रंथों की संख्या कई लाखों में है। इसी तरह व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, संगीत, कोश, कला, राजनीति, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, सुभाषित आदि के भी असंख्य ग्रंथ हैं जो इसकी विविधता के परिचायक हैं। आज के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और गणितज्ञों की प्रेरक भाषा भी संस्कृत ही रही है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत भाषा के उत्थान हेतु संस्कृत दिवस के अवसर पर संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय में भी संस्कृत सप्ताह के दौरान भिन्न भिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। Thank you, sir. Now it's the time for prayer. I would request all of you to close your eyes and join your hands for the prayer. All classes be ready for Gayatri Mantra. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो
प्रचोदयात्। All classes, be ready for prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ Be ready for national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now I would invite Harsimran Kaur to give awareness on Indian mathematician Bhaskara. Namaste. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, parents, and my dear friends. My name is Harsimran and today I am here to give an awareness on Indian mathematician Bhaskara. Bhaskaracharya was a teacher, mathematician, and an astronomer. He also headed the Astronomical Observatory in Ujjain, that was the learning center of India. His contribution to astronomy and mathematics in the 12th century was unparalleled and significant. Bhaskara is also known as Bhaskara II or as Bhaskaracharya. This latter name meaning Bhaskara the teacher. Bhaskaracharya became head of the Astronomical Observatory at Ujjain, the leading mathematical center in India at that time. Outstanding mathematicians such as Brahmagupta had worked there and built up a strong school of mathematical astronomy. In many ways,
Bhaskaracharya represents the peak of mathematical knowledge in the 12th century. He reached an understanding of number systems and solving the equations which was not to be achieved in Europe for several centuries. Six works by Bhaskaracharya are known. The six works are Leelavati, that is on mathematics, Bijaganita, which is an algebra, the Siddhanta Shiromani, which is in two parts, the first on mathematical astronomy with the second part on the sphere. Given that he was building on the knowledge and understanding of Brahmagupta, it is not surprising that Bhaskaracharya understood about zero and negative numbers. His understanding went further even than that of Brahmagupta. To give some more, Bhaskaracharya, like many of the Indian mathematicians, considered squaring of numbers as special cases of multiplication, which deserved special methods. He gave four such methods of squaring in Leelavati. Bhaskaracharya rightly achieved an outstanding reputation for his remarkable contribution. In 1207, an educational institution was set up to study Bhaskaracharya's works. Thank you and have a nice day. Thank you, Simran. Now I would invite Sakshi to share a new word of the day. Namaste, respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, parents, and my dear friend. I am Sakshi of Class Plus 1 Arts. Today's new word is fraudulent. It means cheater who cheats. Its synonyms are fake and dishonest. Its antonyms are honest and valid. Its example sentence is: the guy standing in the front of me at the bank tried to cash a fraudulent check which landed him in prison. Thank you and have a nice day. Thank you, Sakshi. Now I would like to speak something related with the Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is celebrated on the full moon day of the Hindu month of Shravana. This festival celebrates the love of a brother for his sister. On this day, sisters tie Rakhi on the wrists of their brother to protect them against evil influences and pray for their long life and happiness. Now, it's the time to wish our birthday students. Today is the birthday of Anirudh of class 8th B, Dashmeet Kaur of class 8th A, and Saksham of class 2nd A. Let's wish them by singing the birthday song. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Our principal sir, vice principal ma'am, teachers and parents all are giving their blessings to you. Stay happy and healthy. That's all for today's assembly. Stay safe and healthy. Thank you.